start ହେଇନି ଆଉ ଥରେ ପଢ ବୋଲି Dear learners, welcome to today's session. Today is the last class of ESO 11. So I must thanks to our counselor, Dr. Sucharita Misra. I mean, he's accepted our invitation. So one class is left it out. I mean, he's supposed to finish before, but whatever the things, I mean, so ma'am has accepted our invitation. So today, ma'am is going to, I mean, teach you the last block of the ESO 11. So I request to all of you to kindly write your enroll number and name in the chat box. Now the pandemic is spreading like anything, so it's a very critical juncture to all of you. So you are find difficulties to go out. What time this corona will come, that nobody knows. So I just pray to God, my dear learners, stay safe, stay home, stay healthy. So I request to all of you to kindly put your mic in the mute mode. So with these words, I don't want to take much time. I welcome to Sucheta ma'am to today's session, and I hand over the session to ma'am. Thank you so much, sir. A very good morning, खाली dear इंग्लिश learners. रे पढ़ो Hello. A very good morning to all of you. So today our session is on in our last block of ESO 11, that is block 8. Block 8 is denoted to social control, social change, social development, social conflict, all those things. So right now we will discuss it one by one. So first of all, our topic of discussion is social control. So social control pile ame ethi kahaku ame first, before we know social control, we have to know what is control. Generally we have an idea that control is something which regulates our behavior, jaha ki amaro behavior ବ୍ୟବହାର କୁ ସବୁବେଳେ control gote ନ ରହିଲେ we can't give a social order to the society. That means in sociology the study of social control occupies a central importance. Kahinki na the existence and persistence of social control and existence and persistence of a organized social life without social control cannot be possible. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ social control ର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, because ଆମେ ଜାଣୁଛୁ social control is needed for maintaining social order. Then here the question comes, what is social order? Social order ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? Now social order is generally refers to a system of people, relationship, गोटे system माने order कहले ଆମେ कौन बुझुଛୁ? Orderly arrangement of things, or we can say orderly arrangement of relationship, orderly arrangement of our custom, orderly arrangement of our people. That means in an organized way, in a peaceful way. That so to maintain social order we need, but everybody needs society in a society, everybody wants social control. ସମସ୍ତଙ୍କୁ social control ର ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି for a smooth running of society. ଆମେ ଯଦି କହିବା society ବା ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ମାନେ ଆମ behavior କୁ control କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି. So no society can function effectively unless the behavior can be predicted. तो हमको एठी orderliness depends on the network of roles, और social order कहा पर depend करूची? आम network of roles, आमे कोवले role society रे play करूचु. That network of roles also depends on the rights and duties. आमे आमर अधिकार और कर्तव्य सहित भी बहुत मात्रा रे जड़ित. आमे खाली सोसाइटी रो आमे जानिछु we have certain rights, we have certain duties towards our society. So से ताकू भी मेंटेन करबा पई कोन दरकार? प्रथम सामाजिक ऑर्डर आनिबा दरकार. आ सामाजिक ऑर्डर केते बेले आसीबो? when a people is, when an individual is, आमे जदी कहबा भल भाबरे गोटे इंडिविजुअल जदि निजर बिहेवियर को कंट्रोल करि पारला, then we can focus upon the social order. सामाजिक नियम को भी हमें फोकस करि पारिबा. So here the question is,
what is social tamara what is social control is a broad concept ame jodi kahiba social control ta gote choto concept nuhe, it is a broad concept and it refers to a system of devices whereby society brings its members into conformity with the accepted standards of behavior. तामाने आमे जो भलिया बिहेवियर सोसाइटी रे प्ले करूछु सेटा दैट शुड बी अ एक्सेप्टेड बिहेवियर, दैट शुड नॉट बी अ वायोलेटेड बिहेवियर। बुझ परछो जेमति कि आमे हमर नियम अछि रास्तार बां पटरे चलिबा, दिस इज वन पैटर्न ऑफ दैट इज सम काइंड ऑफ एग्जांपल जदी म देबी। सो आमे जदी रास्तार बां पटरे चलुछु देन आमे वी विल मेंटेन अ सोशल ऑर्डर, आमे सोशल ऑर्डर को ठीक रे मेंटेन करी पारिलु। तापरे जदी आमे सेटा को वायोलेट करूछु इट विल हैम्पर नॉट ओनली फॉर इट विल इफेक्टेड एटा खाली हमर समाज को इफेक्ट पकाएनी, इट विल आल्सो क्रिएट सम disturbances in our disorderness in our personality too, हमर व्यक्तित्व ऊपर भी एटा गोटे कु प्रभाव पकाउची बोली कहै जाउची। तो इन द सिमिलर वे जेतेबेले हम एक्सेप्टेड बिहेवियर सोसाइटी रे प्ले करूछु, दैट एक्सेप्टेड बिहेवियर नीडेड और पैटर्न ऑफ कंट्रोल and we know that that control is denoted as social control. तो ताकू ही हमें कहूछु social control. Then here the question comes, what are the nature of social control? आमे जेतेबेले control कोन जानुछु, social control काहा को कह जा जानुछु। And one more thing, E.A. Ross was the first American sociologist to deal with the concept of social control. Concept of social control सहित प्रथम व्यक्ति जे के concept को हम पाखरे आनी पहुंचेले, he is none other than E.A. Ross, which was the first American sociologist. In his famous book Social Control, which was published in the year 1901 रे E.A. Ross कर लिखित फेमस बुक सामाजिक नियंत्रण रे से आम पाखरे सोशल कंट्रोल इन डिटेल ता आम पाखरे आनिके पहुंचेले। तो एठी हमें देखिबा व्हाट आर द नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल लो नेचर बा प्रकृति गुडी को कोन वैशिष्ट्य कोन, जेमति प्रत्येक व्यक्ति रो निर्दिष्ट गोटे वैशिष्ट्य रहिछि। म आगरु क्लास रे भी तुमको कहिछि प्रत्येक जिनसर गोटे निर्दिष्ट वैशिष्ट्य रहिछि। इन द सिमिलर वे सामाजिक नियंत्रण भी जदि हमें देखिबा तार भी किछि गोटे निर्दिष्ट प्रकृति रहिछि जहा माध्यम रे हमें सामाजिक नियंत्रण को एनालिसिस करि परिबा। सो फर्स्ट सोशल कंट्रोल इज it denotes some kind of influence. What does it mean? जदि हमें कहबा it denotes some kind of influence, ता माने होची एटा आम ऊपर किछि मात्रा रे प्रभाव पकाउची। देखो पिले जदि गोटे चोर चोरी करूची तार जदि किछि पनिशमेंट न रहिबो, किछि कंट्रोलिंग मेकानिज्म न रहिबो, अगेन द सेम थिंग विल रिपीटेड इन द सोसाइटी, तार से जिंसटा अधिक मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चलिबो। किंतु एठी हमें कहूचु social control denotes some kind of influence, चोर ऊपर किछि प्रभाव भी पकेइबो, माने कंट्रोल रहिले जे से जानिबो जे एटा मो पय के एटा बहुत खराब जिंस, if I will do the same thing repeatedly then I will punished, बुझियो छ नै। So the influence may be exercised by various ways by means of public opinion हे पारे, तार विभिन्न प्रकार माध्यम रहिछि, सामाजिक नियंत्रण रो माध्यम गुडी को भी अलग अलग रहिछि। We can say that it may be in the means of public opinion, maybe in the means of religion, maybe in the means of ideology, maybe in the means of leadership. So nature of social control lo prathama jinso hochi social control denotes some kind of influence upon the individual. Second category asuchi, the influence is essentially exerted by the society or community. तामाने कोन ना से जो इन्फ्लुएंस इट मे इंडिकेट द एंटायर सोसाइटीज इन्फ्लुएंस, टोटल होल सोसाइटी रो इन्फ्लुएंस ता हमको एठी देखिबा पई पडुची। ओवरऑल द इनन्यूमरेबल स्मॉलर ग्रुप्स, सब ग्रुप, सब जंक जिंस एठी सोशल कंट्रोल माध्यम रे एटा हमको इफेक्ट पकाए। इट नोट द influence of a dominant group or it may signify group dominance over the individual member. So individual member ଉପରେ group dominance ର ବି माने जदि गोटे public opinion गोटे जिंसरे कहले हमें कोन can you please mute your mic? It may influence the dominant group of several smaller groups.
Third category asuchi, the influence is exercised for promoting the welfare of all the individuals or the group as a whole. ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି. Then next one is the influence of society has been there since times immemorial. ମାନେ ଆମେ ଯଦି social control କଥା କହିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି social control is as old as human history. ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଆମେ ଏଟା ଇତିହାସରୁ ବି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ. It is an essential condition for the society, and in the absence of social control no society can ever hold together its members. କୌଣସି ବି society ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ. This is one of the feature. Last one is the influence of social control is universal. Universal means what? Where there is society there is social control. जोठी समाज अछि सेठी नियंत्रण भी अछि. It is there even in the so called uncivilized society. आमे जदि uncivilized society कथा कहिबा सेठी भी आमे सामाजिक नियंत्रण देखिछु. And so एठी गोटे जिंस क्लियर हे गला जे social control is universal. सामाजिक नियंत्रण रहउची सार्वजनीन सत्य. जोठी सोसाइटी अछि सेठी सामाजिक नियंत्रण रहिछि. Apart from that, social control also refers essentially to the means and processes whereby certain goals are to be achieved. जहा माध्यमरे निर्दिष्ट किछि लक्ष्य हासिल करिवारे आमे सक्षम होई पारू. ताबारे होची conformity to norms and expectations of the society. Societal norms और expectation ता आमे fulfill करिवारे सक्षम हो with the help of social. हेलो हेलो Self-control implies the imposition of external control. ए बाह्यर जो शक्ति बाह्यर जो नियंत्रण को आमे कोन imposition करिबाटा को आमे कहूछु कोन self control is not required to compel the individual to do the right thing in a given situation. तो इथे आमे जानुछु there are many persons who are capable of visualizing the consequences of their action in advance and restrain themselves. So एठी हमें गोटे जिंस क्लियर होछु जे सेल्फ कंट्रोल कहिले हमें बुझुछु supplements the mechanisms of social control in producing conformity. जेतेबेले हमें सेल्फ कंट्रोल जानि परिबा सेतेबेले सोशल कंट्रोल को हमको बुझबा को बेसी समय लागिबा नाही, and it will also very helpful, and these are the correlated terms. हमें जति कहिबा social control without self control is quite माने unthinkable. हमें ताको जानि भी परिबानी जदि सेल्फ कंट्रोल जने न जानिची व्यक्ति निज नियंत्रण न जानिची सो नियंत्रण न जानिची सो सामाजिक नियंत्रण टाको शिखिबाटा निहाती भाबरे गोटे कष्ट साध्य हबो. सो सेति पय एठी कहै जाउची द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. Second one is socialization. What is socialization? We have already read the topic related to socialization. Socialization generally it is a process by which the individual from childhood learns and acquires the cultural characteristics of one's group. एटा मु तुमको पढेला बेले भी कहितली
प्रोसेस गोटे शिक्षा लाभ करिवार प्रक्रिया को हमें कहूछु सोशलाइजेशन तामाने चाइल्डहुड जन्मरु बस शैशव अवस्थारु एंड इवन बिफोर चाइल्ड बर्थ मदर्स होम रु ही सोशलाइजेशन प्रोसेस टा स्टार्ट हो जाए मनुष्यर एटा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आउ एटा जीवन व्यापी प्रक्रिया इट एंड्स विथ डेथ जेतेबेले मृत्यु आसे सेतेबेले ही सोशलाइजेशन प्रोसेस टा एंड तामाने सोशलाइजेशन होची so learning process through which and it is a continuous process every day we learn something in the from the society रो सब मेंबर हे पारंती समस्त ठारो हमें किछि ना किछि सिखु सो एबे मते एठी गोटे जिंस आसुची जे सोशलाइजेशन आउ सोशल कंट्रोल निहाती भाबरे दीटा रिलेटेड कांसेप्ट काहे कि ना एटा जदी गोटे लर्निंग आमे लर्निंग रो प्रथम हमको कोन शिक्षा जाय कोटा खराब कोटा भलो से जिंस गुड बैड तापर भी हमें जस्टिफाई करू व्हाट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड ताकू भी हमें सिखू सो सोशलाइजेशन प्रोसेस माध्यम रे सोशल कंट्रोल टाकू सिखिबाटा हमको बहुत इजी हुए सो सोशल कंट्रोल आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन सो फॉर एज socialization involves learning process a system of reward and punishment is required to accomplish it the social control and socialization are mutually related जदि हमें कहबा both the terms are mutually related so हमें एठी जानि गलु रिलेटेड कांसेप्ट रे हमें देखिलु कोड सोशलाइजेशन सॉरी गोटे हला सेल्फ कंट्रोल आ गोटे होची सोशलाइजेशन दीटा रिलेटेड कांसेप्ट जानिला परे अगेन द क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द गोल्स ऑफ सोशल कंट्रोल लो लक्ष्य कोन बा गोल्स हमें को गुडा रहिछि कोन पई सोशल कंट्रोल आवश्यकता जदि कहबा गोल हमें कोन अचीव करबा सोशल कंट्रोल माध्यम रे प्रथम जिंस होछि कन्फर्मिटी व्हाट इज कन्फर्मिटी ना इट इज वन ऑफ द एम्स ऑफ सोशल कंट्रोल एटा सामाजिक नियंत्रण रो आउ गोटे लक्ष्य is to bring about conformity in the society conformity कोन ना social control mechanisms are employed to control check or prevent the deviant behavior कोटा डेविएंट बिहेवियर कहले कोन ना जो गुडा विशृंखलित बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जोटा एक्सेप्टेड बिहेवियर सोसाइटी रो नुहे ताकू हमकु जानिबा पाई कि कन्फर्मिटी बेसिस रे ही हमें सिखु जे को जिंसटा हम पाई भलो कोटा खराब एंड वी विल चेक एंड प्रिवेंट द डेविएंट बिहेवियर so deviant behavior is dysfunctional to the society I mean it is not functional for the society deviant behavior created disorganization in the society so the objective of social control is to safeguard the group against such dysfunctional consequences of deviant behavior रा बा खराब जो behavior टाको केमती कंट्रोल करा जाय परिबो बा ता माध्यम रे how we check and prevent our deviant behavior that is known as the conformity ता माने social control रो मुख्य लक्ष्य रहउची प्रथम गोल आछी प्रथम एम होची कोन conformity तामाने we will conform about the norms of the society we will conform about the rules of the society we should conform about the values of society that denotes to conformity then second one is uniformity what is uniformity now it is a related objective of social control the related objective of social control is to produce uniformity of behavior माने मु जो जिंसरा कहली जेंति रास्ता रो बां पटरे चलीबा so that is a uniform behavior समस्त से नियम टा को मानिबा को बाध्य ना कि मु बां पटरे चलिबो आ के ता कर डाहाण पटरे चलिबो बुझि होछ ना नै so we will maintain a uniform पिले जानि छ जेमति कि सब माने स्कूल ले जो यूनिफॉर्म पिंधा जाय यूनिफॉर्म कोन पय समस्त ऑल आर इक्वल बेसिस देखिबा पय we need a uniform we wear a uniform in the similar way social control is to produce uniformity of behavior रे uniformity आनिबा चोर भी रास्ता रे बां पटरे चलिबो कोन माने गोटे भलो लोक भी रास्ता रे बां पटरे चल that means the uniformity will maintain with the basis of social control that is one of our motto तो हमर आउ गोटे लक्ष्य होची कोन ना आउ गोटे ऑब्जेक्टिव कोन ना यूनिफॉर्म बिहेवियर क्रिएट करबा सोसाइटी रो सब मेंबर को भितरे यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर क्रिएट करबा ना कि से राजा से चलीबनी कि प्रजा से चलीबनी बुझियो छ ना नै सो दैट इज डिनोटेड एज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर
Third one is solidarity. What is solidarity? We also, this is a very important objective of social control. Social control लो प्रथम basic important objective होची कौन? Solidarity. जेमती कि हमें जानिचु the different parts have to maintain, the different parts of the society have to maintain an equilibrium with each other. Equilibrium कहले हमें कौन करूचु? जे समानता डिफरेंट माने बैलेंस आनिबा पई दीटा जिंस रे डिफरेंट पार्ट्स जो सोसाइटी रो सब पार्ट्स भितरे हमें जते बडे बैलेंस आनिया को चेष्टा करू हमें जते कोऑर्डिनेट करबा को चेष्टा करू व्हेन वी मेंटेन अ कोऑपरेशन जते बडे परस्पर सहित कोऑपरेट करबा को चेष्टा करू वी एन्श्योर दैट सोशल सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी से सोशल सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी ता रहिथिबा निहाती भाबरे आवश्यक बोली कह जाउची एंड हाउ इट मेंटेन ना इट मेंटेन्स ओनली थ्रू द सोशल कंट्रोल माध्यम रे ही सोशल सॉलिडारिटी ता पॉसिबल हे परिबो एंड दैट इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी समाज रे समानता बा इक्विलिब्रियम मेंटेन करबाटा आसे मेंटेन करबाटा कहा माध्यम रे पॉसिबल हे पारे ओनली विद द दैट इज द मेजर एम ऑफ सोशल कंट्रोल. Then fourth one is continuity. What is continuity? Now social control is also necessary to maintain the accumulated culture of the group. Accumulated culture of the group कहले हमें कौन बुझुछु ना आमे सबु जिंस रे जेमति कि गोटे एग्जांपल नेले when parents insist their children following family customs or practices तमरो फैमिली रे जो कस्टम्स जो प्रैक्टिसेस गुडा अछि जेते बेले पेरेंट्स तुमको कोन कहउचंती व्हेन पेरेंट्स इंसिस्ट तुमको इंसिस्ट करनती यू शुड फॉलो दैट फैमिली कस्टम एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस सो देयर कंटिन्यूटी ओवर जनरेशन जोडा तमे सिखो सेटा तमे अगेन तमरो नेक्स्ट जनरेशन को सिखेबा को चेष्टा करो ता माने एटा कोन इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूटी एटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया बा निरवच्छिन्न प्रक्रिया बोली हमें को कहि परिबा इन द सिमिलर वे social control is also necessary. Social control kaha pai आवश्यक ना to necessary to maintain and preserve the continuity of culture. Continuity of culture maintain करिबा pai सामाजिक कोन continuity sorry social control लो एटा गोटे लक्ष्य. Then another one is social change. Social change कोन we also have little bit of knowledge related to social change ame janichu any modification or alterations within the society samaj bhitare जदि किछि नुवा जिंस होउची किछि मॉडिफाइड चेंज होउची किछि अल्टरनेटिव चेंज आसुची ताको हमें कहूछु सोशल चेंज सो हाउ सोशल चेंज इज द एम ऑफ सोशल कंट्रोल सोशल चेंज रो सोशल कंट्रोल लो सोशल चेंज ता केमती गोटे लक्ष्य बोली हमें जानूछु the social control is employed not only to conserve the existing patterns but also sometimes to induce desired social changes ता माध्यम रे हमें desired social changes जो social control माध्यम रे हमें कोन करि पारू देखो बिले चेंज दी प्रकार आसे गोटे होची डिजायर्ड सोशल चेंजेस हमें चाहुतिबा हिसाब रे परिवर्तन होबा आ गोटे होची अनडिजायर्ड सोशल चेंजेस डिजायर्ड सोशल चेंजेस ता हमें जते बेले ह्यूमन बीइंग बा इंडिविजुअल नीड करे सेते बेले से आवश्यक माने आनी थाए किंतु अनडिजायर्ड सोशल चेंज जेमति कि वर्तमान परिस्थिति तमे कहि परिबो इट इज एन अनडिजायर्ड सोशल चेंज सो वी डोंट हैव दैट कंट्रोलिंग मेकानिज्म ओवर दैट पर्टिकुलर पैंडेमिक हमर ता ऊपर एबे कंट्रोल करिवार किछि ये नाही सो दैट इज एन अनडिजायर्ड चेंज जो थरे कि हमें सोशल कंट्रोल लगे परिबा नाही बट सोशल कंट्रोल को जगह रे आसुची व्हेन वी नीड अ डिजायर्ड सोशल चेंज जेते बेले हमें आवश्यकता अनुसार हमरो जोटा दरकार से हिसाब रे सामाजिक परिवर्तन को आशा करू देन सो सोशल कंट्रोल इज हाईली एसेंशियल टू एम्प्लॉय द डिजायर्ड सोशल चेंज सो डिजायर्ड सोशल चेंज रे जदी मु किछि एग्जांपल देबी हमें को प्रकार रो डिजायर्ड सोशल चेंज सोसाइटी रे आनिचु जेमति कि हमें कहिबा टू चाइल्ड फैमिली नॉर्म टू चाइल्ड दीटा छुआ बार जो फैमिली नॉर्म जो रहिछि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी हैला रिमूवल ऑफ डाउरी हैला तापरे कोन वी विल प्रैक्टिस द विडो रिमैरेज दीस आर द डिजायर्ड सोशल चेंजेस सो एति के गला परे तापरे तमर आसुची व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोशल कंट्रोल लो मेथड्स कोन बा जहा को हमें कहबा व्हाट आर द
to which method we apply social control, को मेथड माध्यम रे हमें सामाजिक नियंत्रणटा सोसाइटी रे पकेबा. So methods of social control can be broken into two types. दीटा भाग रे विभक्त करा होची. गोटे होची informal social control, another one is formal social control. So what is informal social control? Now informal social control is also known as primary social control. प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण बोली आमे को कहिथाउ. काहेकि ना it is more effective in what sociologists called as primary group. आमे जोटा कहूछु कि हमर प्राथमिक कौन प्राइमरी ग्रुप बोली आमे को कहिता. सो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को काहे कि ना इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल ता मनीष प्रथम कोठु सिखे तार प्राइमरी ग्रुप रु ही सिखे. ता माने द प्राइमरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली मोर होमोजेनियस, स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड इंटीमेट ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप ता स्मॉल हे थाए, कॉम्पैक्ट हे थाए, आ मोर होमोजेनियस हे थाए, ब रिलेटेड हे थांती एंड दीज आर द इंटीमेट ग्रुप बोली आमे कहूछु. So the members are tied to each other. प्रत्येक मेंबर माने परस्पर मध्य रे बांधी होई कि रही थांती and to the group by feelings of personal loyalty. कहा माध्यम रे ने गोटे पर्सनल लॉयलिटी माध्यम रे समस्ते परस्पर सहित बांधी होई कि रही थांती. सो एठी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हमें कहार एम्फासिस रही छी ना फैमिली रो, प्ले ग्रुप रो, नेबरहुड रो, जहा कि तमरो प्राइमरी ग्रुप रे थिला, नेबरहुड रो, रूरल कम्युनिटी रे एंड सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्पैक्ट सोशल ग्रुपिंग. एई गुडा होची सोशल ग्रुपिंग रो स्मॉल कॉम्पैक्ट सोशल ग्रुपिंग बोली हमें को कहिताऊ. विदिन अ फैमिली द इंडिविजुअल इज अंडर द कंट्रोल. सब बेले हमें फैमिली भीतर रहले अंडर कंट्रोल ले रहउछु हां कि नै. So under the control of every rules and regulations, thus no individual or group can be free from social control. ताहले हमें केमति कहि परिबा जे we are free from social control. Although we are somebody can say that I am free from formal types of social control, but nobody can say that I am free from the informal social control, because informal social control is also known as the primary social control. We may say that in such social settings, social control exists like a set of concentric circles. तामाने आमे एठी प्रत्येक जिंस को सोशल कंट्रोल को मेथड्स ऑफ कंट्रोल आर इफेक्टिव not only in primitive society. आमे कहिबानी खाली primitive society रे आमे ए प्रकार सोशल कंट्रोल देखुतलु, in which primary groups and relations are bound, but are also effective in modern complex societies. Modern complex society रे भी सेही pattern of social control आमे देखिबा पई पाउछु. So we it may be such as ame kichi modern complex society tar terminology may be change कर दउछु, particularly within the secondary group को हमर पड़े आसुची social control ता. We may take voluntary associations, clubs, trade unions, तांको पाखु आसी जाउची, but these are also the effective informal social control to achieve our goal, but to regulate our behavior, to control our behavior. So this is the informal social control. Second one is formal social control. Formal social control कोन ना एटा ए formal social control ले हमें को जिंस देखुछु, it is usually found in larger society, जाके हमें कहिबा याको हमें कहूछु secondary social control. काहे कि secondary social control कह जाउची ना, it is found in larger and secondary groups. Modern complex societies such as ours are good examples of social gatherings. आमे जदि नबा modern complex societies टा वर्तमान हे जाउची कोन informal patterns of social control. In such societies we find a large number of groups which are characterized by impersonal relation. It relationship टा personal रहिला नाही, impersonal relation, and are oriented to certain specific objectives. किछि specific objective भितर एटा बांधी कि रोजी. In these secondary groupings, relations among the members are more formal and less intimate. बहुत formal है था. Formal माने हमें कहा कोई जोड़ जोड़ secondary based relationship थिबो, आउ से relationship टा
less intimate ହେଇଥିବ ଅଧିକ intimacy ଏଠି ନଥିବ their relationship among the informal controls such as different gossips ତମ ନାଁରେ କିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି so it is also a means of social control ତମେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ rectify କରୁଛ ବା ତମେ ନିଜେ feel କରୁଛ ଯେ ଏଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ବୁଝିବ analysis କରୁଛ so we may take it is also known as the fact in sociology that informal groups do develop within such formal organizations. Formal organization ଭିତରେ ବି informal means of social control ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ. So generally speaking, in secondary groupings, informal controls take their place both positive sanctions in the form of reward ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଲେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ ସାଂକ୍ସନ୍ସ ରହିଛି ପଜିଟିଭ ସାଂକ୍ସନ୍ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଅନର ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ସାଂକ୍ସନ୍ସ ବି ରହିଛି ଇଫ ୟୁ ଡୁ ସମ୍ ବ୍ୟାଡ ଡିଡ୍ ବା ଖରାପ କିଛି କାମ କରୁଛ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନେଗେଟିଭ ସାଂକ୍ସନ୍ସ ଡିନୋଟେଡ୍ ଟୁ ପନିଶମେଣ୍ଟସ୍ explosion etc ଯେମିତି କି ତମକୁ କିଛି ଖରାପ କଲେ ତମ ପାଇଁ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ତମର ନେଗେଟିଭ ସାଂକ୍ସନ୍ସ so thus they can easily ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ in complex society there is always a conflict of norms and values of different groups norms and values ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ conflicting situation ରହୁଛି one group may approve the conduct which may be disapproved by some other group ଗୋଟେ group ଯଦି approve କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ group ରେ ସେଟା disapproved ବି ହେଇଯାଉଛି under such circumstances ଆମେ ଜାଣୁଛୁ it is ultimately taken as a formal agencies of social control ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ formal agencies of social control ବୋଲି କହିଥାଉ then ତମର ଆସୁଛି mechanisms means and consequences of social control ର means କଣ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡୁଛି consequences କହିଲେ ବା ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ପଡୁଛି ତା ଇଫେକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା what are the types of mechanisms କୋଉ को categorize करा जायछि को mechanism basis प्रथम mechanism अछि preventive mechanism कोन now these mechanisms are designed to prevent such situations from developing that might leads to deviant socialization social pressure establishment of role priorities force are some of the mechanisms through which conformity is promoted or the occurrence of deviance is prevented ता माने कोन ना ए जो mechanism preventive कहले हमें कोन बुझुछु ना जो जिंसटा जिंति कहा जाउची तमरो these mechanisms are designed to prevent the situations तमे जानि छ prevention is better than cure जोटे वर्ड अछि क्योर ठारू किछि प्रिवेंशन नबाटा ही आगो हम पे प्रायोरिटी सो एठी हम प्रथम मेकानिज्म रे सोशल कंट्रोल ले कोन रहउची ना प्रिवेंटिव मेकानिज्म प्रिवेंट कहले जेमति कि किछि सिचुएशंस फ्रॉम डेवलपिंग रो हो डेविएंट सोशलाइजेशन हो प्रेशर हो सोशल प्रेशर हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोल प्रायोरिटीज हो ताकू हमको प्रथम एठी गोटे टाइप्स ऑफ मेकानिज्म बा प्रिवेंटिव मेकानिज्म हिसाब रे हम सेही सब जिंस उडा को एठी प्रायोरिटाइज करूछु Second is mechanisms to manage tension. What are the mechanisms to manage tension? Now, institutionalized safety valves like humor, games, sports, leisure, religious rituals. These are also regarded as the outlets of tensions generated by social restraint and cultural inconsistencies of within the society. Next mechanism आसु तमरो mechanism to check or change deviant behavior check करिबा और change करिबा deviant behavior को so here we need the social sanctions को एटी दीटा टाइपोलॉजी करा जायछि फर्स्ट sanction आसु तमरो psychological sanction माने हमें कोन these are the negative sanctions are reproof ridicule the non acceptance Positive sanctions include the acceptance of the group, जोटा already हमें discuss करूचु, praise, invitation, inner circle event, verbal or physical part of back gift, ये सब जिनस होची कौन positive sanction, negative sanction है तमार जो punishment रही ची, ridiculous acceptance रही ची, एटा को जाउची तमारा psychological sanction है.
Second as physical sanction. Physical sanction कौन ना physical sanction they are mostly negative. Why? Now the most important form of physical sanctions are expulsion, physical punishment. एठी generally physical punishment ऊपर अधिका ये दे जाउची सेति पे याको हमें physical sanctions बोली कहूचु. Another form of sanction is economic sanction. Economic sanction कौन? These include the positive rewards. एठी positive rewards करवा जाउची like promotion, तमरा grant of tender, गोटे civic minded businessman रो tender pass करिबा ए सब जिंस होची economic sanction रो positive rewards. Negative sanction तार कोन रहउची like threat of loss, reduction, loss हबा, reduction हबा, employer न पाइबा, economic boycott कर दिबा. These are the negative economic sanctions. तापर आछि नेक्स्ट प्रोपागेंडा मेकानिज्म. प्रोपागेंडा मेकानिज्म कोन ना इट इज अनदर इंपोर्टेंट मेकानिज्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. सबे आवश्यक हम नीड टू सी वे चेंज टा आसीता है. दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपागेंडा मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन को कहूचो प्रोपागेंडा. दैट प्रचार प्रसार जो जिनसरा को लोक कथा बा जो प्रचार करा जाय सेटा हला प्रोपागेंडा. प्रोपागेंडा इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कंट्रोल द बिहेवियर. जेंते पे सब बडे अनाउंस चलची मास्क पिंदो ये करो बुझुछ ना. सो दिस आर सर्टेन इफेक्ट ऑन सोशल कंट्रोल. ताको तम बिहेवियर को कंट्रोल करिवा पई प्रोपागेंडा ता निहाती आवश्यक. So propaganda is a deliberate attempt to control the behavior and interrelationships of members in order to change the feelings, attitudes and values. बुझी अछि तो सेति को एटा हला तमर कोन mechanisms. Then the question comes, what are the means of social control? Social control लो माध्यम गुडी को कोन. प्रथम means आछि custom. Undoubtedly custom is also a means of social control जहा माध्यम रे हमें प्रथम सामाजिक नियंत्रण रो प्रथम प्रमुख माध्यम होची कोन कस्टम बा प्रथा. एठी social codes found in every society provide standardized way of doing things. ता माने standardized ways of doing things उडा कोन the severity would depend on the importance attached to the particular customary regulation. प्रत्येक कस्टम रे गोटे किछि रूल्स और रेगुलेशंस रही छि. सेटा से रूल्स और रेगुलेशंस को वायोलेट कले तमरो निहाती किछि माने तार माने कोन तार किछि बैड इफेक्ट पड़ी थाए बोली हमें जानिछु. सो एठी सेटा कहउछि कस्टम इज सस्टेन्ड बाय कॉमन एक्सेप्टेंस. प्रत्येक लोक सेटा को एक्सेप्ट करूथिबा दरकार. इनफॉर्मल सोशल प्रेशर्स आर ब्रॉट टू बियर इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ कस्टम. जदि हमें कस्टम को वायोलेट करूछु ताले इनफॉर्मल सोशल प्रेशर हम ऊपर पड़े बोली कह जाउछि. Violation of mores on the other hand inspire intense reaction and punishment may involve expulsion from the group. ए सब जिंस कस्टम बेसिस रे कस्टम गोटे मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हिसाब रे हम पाखरे आसी थाए. सेकंड वन इज लॉ. हाउ लॉ इज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. Undoubtedly certain norms becomes laws. किछि नियम वर्तमान लॉ हिसाब रे चली छै लीगली अप्रूव्ड करा जाय छै. When a society feels strongly that norms should become a law, laws are formal standardized expression of norms, so enacted by legislative bodies to regulate certain types of behavior को regulate करिवा पई laws रो आवश्यकता निहाती भाबरे रहिछि. Laws not merely state that behaviors are permitted and not permitted, but they also state punishment for violating the law. जदि हम law violate करूछु we have certain forms of punishments. हम पई किछि punishments भी रहिछि. Then third means of social control कोन ना religion. How religion is a means of social control. ना एठी हम गोटे जिंस देखुछु all religions are seen to have following element. प्रत्येक रिलीजियन ना हमें पढ़ितलु रिलीजियस सिस्टम रे निर्दिष्ट गोटे कोन रहिछि एलिमेंट्स बा उपादान गुडी कर रहिछि. जदि हमें देखिबा थिंग्स कंसीडर्ड सैक्रेड कोटा पवित्र कोटा अपवित्र सेटा हम रिलीजियन नु जानिछु. सेट ऑफ बिलीवर्स किछि लोकंकर विश्वास को नै कि आसी थाए. थर्ड सेट ऑफ रिचुअल्स रिलीजियन रिचुअल्स और सेरेमनीज गुडा भी थाए. फोर्थ system of beliefs such as doctrine or holy books. Belief system भी ता भीतर कहा माध्यम रे आसे ना तमरो होली स्क्रिप्चर माध्यम पवित्र ग्रंथ मानक भीतर भी हमें
find out करो a certain form of organization. So religion जदि एतक element ता भितर अछि, undoubtedly these are the controlling mechanisms of a individual's behavior. गोटे individual behavior को control करिवा पई एतक जिंस जदि गोटे religion भितर अछि, so religion is also considered as a means of social control. Religion contributes to stability and order in society. समाज रे सामाजिक स्थिरता आनिबारे भी religion न प्रमुख भूमिका रहिछि, सेतिपय हम religion को गोटे means of social control हिसाब रे नउछु. Another one is education. The institution of education helps to control human behavior through socialization of the young and adult members of the society. The different levels of formal education transmit the culture of society to individuals within the society. अच्छा, education undoubtedly शिक्षा निहाती भाबरे दरकार as a means of social control. काहे कि ना it is a the education is valued for the understanding its impact. Education impact बहुत मात्रा रहिछि about social and physical environment उपरे. तापरे हमें कौन देखुछु, educational systems and educators and other socializers always successful. There would be no deviance and no social conflict. This brings us the topic of the family. हमें जदि एई जो जिंसटा एजुकेशन रो देखिलु कोन ना, एजुकेशन ब्रिंग्स नो सोशल कॉन्फ्लिक्ट. जदि नो सोशल कॉन्फ्लिक्ट आसुची ताले एजुकेशन गोटे मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, and it will also very essential and very beneficial for maintaining social order. सामाजिक order आनिबा बरे भी एटा बहुत हेल्प करे. Next one is family. How family is a means of social control? आमे जानलु family हो जोटे primary means of social control बा जहा को मैं primary group बोली कहूछु. काहे कि ना एठी family performs certain important functions. Family निर्दिष्ट किछि functions perform करिथाय. These include socialization आमे सिखु, imparting of affection sikhu, emotional support sikhu, regulation of sex sikhu, and also we learn the how to, these are the functions of reproduction also bring found within the family. So family is not only an important agency of socialization but of social control as well. सेतिपई एटा गोटे खाली agency of socialization हमें कहि परिबानी, it is also a means of social control. इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, स्ट्रेस टेंशन ए सब जिनसर केयर नबा, सब जानक जिनसर हमें फैमिली रो आवश्यकता निहाती भाबरे करा जाय. नेक्स्ट वन इज लीडरशिप. It can also help important role in social control. It develops out of the process of interaction itself. Leaders have guided the destinies of group, communities and nation. If the leader enjoys group support, his or her suggestion and directions leads to the members towards some common values and goals. देखो गोटे निर्दिष्ट ग्रुप रो जदि लीडरशिप टा भलो अछि ताहले सेटा गोटे इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हिसाब रे काम करे. केमिति ना, लीडर जदि गुड वैल्यूज, गुड कण गोल्स सब जो जिंस उडा सिखै थाए, सो समस्त से जिंसटा को मानिबा पई मानंती लीडर्स चाहे कोई सारी हिसाब रे फॉलो अप करा जाए. So leadership is a very good quality to play an important role in social control. Next one is mass media. Mass media, no doubt mass media is very essential as a means of social control. Mass media like tamara mass communication such as newspaper, TV, radio, internet, public opinion, propaganda, these are the कौन एड्स जहाँ माध्यम रे we know how to change, how to control our attitudes and our behaviors. जो जे so new values and lifestyles, fashion, wants, ideas, these have certain impact upon the individual. Last one is force. फोर्स माध्यम रे केमती सोशल कंट्रोल आसे देखो, एते गुडा जो हमें सोशल कंट्रोल पढ़ी पढ़ी आसिलु मीन्स ता धर आउ गोटे जिंस रहिछि फोर्स. फोर्स केमती ना, दो सम सोशियोलॉजिस्ट हैव नेग्लेक्टेड और अंडर एम्फसाइज्ड द एलिमेंट ऑफ फोर्स or physical coercion in social relationship. The role of source in social control cannot be underestimated. आको हमें मना भी करि परिबा नाही. काहे कि ना, in some types of societies such as totalitarian states, physical force and violence are used as significant instrument of
सोशल कंट्रोल हिसाब रे जदि हमें ठीक रे जो जिनसरा भल रे न हुए सेठी फिजिकल फोर्स भी करा जाए बा प्रयोग करा जाए. दिस सिग्निफाइज द फैक्ट दैट द रिजोर्ट ऑफ फोर्स एंड वायलेंस इज द अल्टीमेट आंसर टू मेनी इश्यूज व्हेन अदर मीन्स आर फेल्ड. जोठी अलगा सब माध्यम गुडा फेल मारी जाए सेठी फिजिकल फोर्स रो भी आवश्यकता रही बा फिजिकल कोहेजन रो भी आवश्यकता रही. सो दीज आर द मीन्स. एतिक मीन्स जानला परे अगेन हमर आछ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फलाफल कोन रहिबो. तो social control is seen as necessary for promoting continuity, stability, and conformity in societies. It can become dysfunctional at some times. Dysfunctional माने जिते जिते जिनस हमें वर्तमान पर्यंत पढ़िलु these are the functional qualities of social control. एठी हमें देखिबा what are the dysfunctional qualities. Dysfunctional qualities रो प्रथम जिनस आछि exploitation. एठी कह जाउची प्रथम प्रभाव पडुची एक्सप्लोइटेशन. एक्सप्लोइटेशन कोन शोषण आमे जदि कहिबा सोशल कंट्रोल मे समटाइम्स बिकम अ सब्टल मीन्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. Some of the dominant groups or individuals may simply use it to fulfill their own vested interest. एठी कह जाउची निर्दिष्ट किछि लोकंक द्वारा सोशल कंट्रोल करा जाय तांकर स्वार्थ हासिल करिबा पाई. These interest may be political है पारे, economic है पारे, social भी है पारे. जेमति कि ruling party may try to perpetuate its rules. जे ruling party हेतिबो politics रे से ही तार रूल टा करे से ही तार कंट्रोलिंग मैकेनिज्म टा लगाए. आज जेमति कि अरे बिजनेसमैन बिजनेस फार्म रे may try to sell his substantiated goods by means of utilizing the techniques of social control. सोशल कंट्रोल को लगे कि केमिति कोन ता गुड्स गुडा सेल करिवो सेही कथा ही भाबुताय. बुझियो ना. सो प्रथम कॉन्सिक्वेंस बा डिसफंक्शनल क्वालिटीज रा प्रथम आछि एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट वन इज इनहाबिटिंग रिफॉर्म एंड चेंज. इनहाबिटिंग रिफॉर्म एंड चेंज माने social control may have limiting consequences in that it may sometimes inhibit creativity and obstruct the attempts at constructive reforms and social change. एठी कहूची जे रिफॉर्म आउ चेंज आनिबारे सोशल कंट्रोल टा बाधा सृष्टि करे. काहे कि नेटा सब बेले क्रिएटिविटी को oppose करे and it will always obstruct and attempts the constructive reforms. सामाजिक परिवर्तन आनिबा पई एटा बाधा सृष्टि करे. काहे कि गोटे जोठी जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म चलथिबो सेही हिसाब रे हमें सोसाइटी डील करबा को चाहो and we don't have any rights to do according to our own creativity. हम निजो क्रिएटिविटी ता सेठी धीरे धीरे रही पारे नाही. नेक्स्ट बा थर्ड कैटेगरी हैला साइकोलॉजिकल प्रेशर्स. व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर्स केमती आने ना सोशल कंट्रोल हमें जानलु जदी ए सब जिंस गुडा डील करबो अल्टीमेटली it will exert the enormous amount of emotional and psychological pressure on some individuals. एटा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी लोक मानक भितरे आनिबो. तापर हैला सोशल टेंशन. Psychological pressure रहिले सेठी social tension आसिला. Social control may also lead to social tensions, particularly in a large complex society. Here there may be different groups with their distinctive interests, norms and values which may conflict with each other. When attempts are made by one or more group to impose their own standards on other, conflict and struggle become inevitable. सो एठी सोशल टेंशन टा धीरे धीरे बढ़िला काई ना लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज रे सोशल कंट्रोल टा ठीक भाबरे एडजस्ट करबा बा सोशल कंट्रोल डिस्टिंक्टिव न विभिन्न माने मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी लार्ज सोसाइटी रे कोन नॉर्म्स वैल्यूज गुडा कोन डिस्टिंक्टिव रहइबा डिफरेंट पैटर्न्स रो रहइबा समस्त को मैच कला हलिया नॉर्म्स और वैल्यूज सहित लॉ तयारी करिबारे हमें सोशल कंट्रोल किछिटा सोशल टेंशन बिल्ड अप करूची बोली. So this is about your consequences and there has certain limits of social control. Limits the effectiveness of social control को हमें कहिबा limits कोन ना each group is organized around norms and values. प्रत्येक group टा को हिसाब रे organized हेतांती according to their own norms and values, societal norms and values. So social control is intended to check the deviations from these standards.
Second one is the effectiveness of social control is also limited by the degree of consistency in cultural directives. तो आमे इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल कंट्रोल टा लिमिट हे जाउची को जगह रे ना जते बेले डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बा कल्चरल डायरेक्टिव्स टा अधिक हुए इफ द कल्चरल परसेप्शंस are uncertain and inconsistent, then social control cannot operate successfully. Social control ta successful operate kari pare nahi se jagar joti cultural prescriptions kon heta hai uncertain heta hai अनिर्दिष्ट थाए inconsistent थाए सेठी social सामाजिक नियम ठीक भाबरे कार्यकारी होई पारे नाही. Next one is, in a complex society it is not generally possible to impose social control uniformly on all groups which are divided on the basis of class, caste, religion, race, etc. ए सबु जंक क्लास, कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर ए सबु बेसिस रे सोशल कंट्रोल टा गोटे यूनिफॉर्मिटी बेसिस आनिबारे कष्ट हुए बोली कहा जाउची. नेक्स्ट वन इज सोशल कंट्रोल implies huge economic costs to the society. The control of deviance requires a disproportionate share of societal attention and resources. So huge expenditure has to be incurred, and the establishment of social control agencies such as police, prison, mental hospitals, etc. There is a limit. आधरे बहुत huge expenditure हुए बोली कहा जाउची. So these are the limits of social control. Hope you all will understand what is social control. As एतिक जिनस हमें जानिलु social control कोन. तापरे तमरो किछि की नोट्स भी रहि जेंते social sanction हमें कहा कहबा punishments given for the non conformity to social norms is called sanctions. अच्छा एतिकी गला परे तमरो next unit, this blocks next unit is dealing with social deviance. So question comes, what is social deviance? Deviance कहले हमें कोन बुझुछु ना. Deviance and control are the key concepts. These are the key concepts linked to the central conceptual framework of sociology. So deviance रे हमें प्रथम जिंस देखिबा जे the study of deviance cannot be undertaken without the reference to norms. Norms बिना हमें deviance टा को एठी analysis करिबाटा कष्ट होई माने सहज होई परिबा नाही. Norms are prescribed standards. Norms होची कोन? Prescribed standards which guide and regulate our behavior. जहा कोन करे ना हमर बिहेवियर को गाइड करिबा और रेगुलेट करिबा पई नॉर्म्स रा आवश्यकता रहिछि. For this reason, it is only with the reference to norms that we can speak of or define deviance. Norm basis रे ही हमें deviance टा को एठी define करिबा. Human society permits certain variations in the behavior demanded by the norms. Human society से हिसाब रे ही societal norms को रखी की ही तमर कोन होची variations in the behavior demanded by the norms. So विभिन्न प्रकारर variations of behavior एठी देखा जाए. Essentially these variations are well defined by the cultural norms of the society concerned. तो एठी हमें प्रथमे देखिबा what are the difficulty in defining deviance. Difficulty कोन रहउची हम तले deviance को define करूछु. Norms are not the same everywhere. So हमें जानिचो सबु जगह रे norm गुडा समान प्रकार नुए. सबु जगह रे societal norms equal by uniform basis रे आसी न थाए. They vary from group to group. गोटे ग्रुप रो आउ गोटे ग्रुप को गला बेलु को बा गोटे सोसाइटी रो आउ गोटे सोसाइटी को आसिला बेलु को norm अलगा होई जाय थाए. So it is not easy to identify those behaviors that are universally defined as departures from some norm or norms. So for example, जेमते कि prostitution may be viewed as well as defined by law as deviant behavior in India and USA. It in certain European countries, prostitutes can operate openly in specific areas. तामने एठी को जाउची जदी गोटे सोसाइटी रे prostitution को बैन करा जायछि and it is not openly accepted like India and USA. It in certain European countries prostitutes can operate openly in specific areas. आउ किछि countries रहिछि जोटी prostitute माने स्पेशल ओपनली तांकर ओपनली स्पेसिफिक एरिया रे काम करि पारନ୍ତି. So they
here we are taking a relative view of deviation. हमें गोटे relative comparison करू deviation एठी हमें देखिलु behaviors, notions and products of human interaction can be understood or evaluated only within the context of the culture and society of which they are the part. जो सोसाइटी जहाँ कल्चर पार्ट होइतिबे सेही हिसाब रे ही हमें तांकर डेविएंट बिहेवियर ता ह्यूमन इंटरेक्शन ता हमें मूल्यांकन करिथाउ. So a relativist view of deviance implies that deviance can be interpreted only in the socio-cultural context in which it occurs. जोठी एटा देखा जाए से हिसाब रे ही डेविएंट बिहेवियर ता एठी एनालिसिस करा जाए. डेविएंस इज नॉट एब्सोल्यूट but relative to the social explanations, norms and rules of the particular society. Norms को नहीं कि rules को नहीं कि जो सोसाइटी रे डेविएंट बिहेवियर अलग अलग टाइप रो हम एठी देखिबा पई पाइथाउ. काहे कि ना मैं प्रथम रो कहलु no norms are uniform to all society. सब सोसाइटी पई यूनिफॉर्म नॉर्म टा नुहे. सोसाइटी टू सोसाइटी नॉर्म और वैल्यू वेरी करे. तो जदि सोसाइटल नॉर्म्स वेरी करूची सेठी डेविएंस बिहेवियर टा भी अलग टाइप रो रहिबो. सो हियर द क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द वेरिएशंस इन डेविएंस. डेविएंस रो से वेरिएशन उडा कोन. प्रथम वेरिएशन होची वेरिएशन बाय टाइम. वेरिएशन बाय टाइम कहले हम कोन बुझुछु ना इट इज एन एक्ट considered deviant in one time period may be considered non deviant in another time period. गोटे टाइम पीरियड रे जदि हमें देखुछु एटा गोटे डेविएंट बिहेवियर आउ गोटे टाइम पीरियड रे देखिले एटा डेविएंट बिहेवियर नुहे. हाउ ना फॉर एग्जांपल इन इंडिया women pursuing collegiate education were defined as deviant in the 19th century. 19th century रे women माननकु कॉलेज एजुकेशन जदि से माने नउथिले ताले सेटा गोटे डेविएंट बिहेवियर बोली कहा जाउतला. बट टुडे women pursuing higher education are not considered deviant. एबे हायर एजुकेशन नेले भी ताको डेविएंट बिहेवियर बोली कहा जाउ नाही. सो वेरिएशन बाय टाइम गोटे टाइम रे हमें देखुतलु वुमेन एजुकेशन टा को 19th सेंचुरी रे डेविएंट बोली कहा जाउतला. बट इन केस ऑफ टुडे बट इन केस ऑफ 20th century we will see that women pursuing higher education are not considered as deviant. So it is the variation by time. Second is variation by culture. How variation behavior viewed as deviant in one location or culture may be considered non-deviant in another location. गोटे बिहेवियर गोटे कल्चर हमें देखुछु कोन सेटा डेविएंट बोली कहूछु किंतु आउ गोटे कल्चर को गला बेलो सेटा डेविएंट कहा जाउ नाही. त माने कल्चर टू कल्चर वेरिएशन बुझियो छ ना. इन सम कल्चर हैविंग मोर देन वन वाइफ इज परमिटेड. किछि कल्चर रे अछि गोटे रु अधिक विवाह हेले बा पॉलीगामी फॉर्म ऑफ मैरिज हैविंग वन वाइफ इज कंसीडर्ड परमिटेड. it may signify the high financial and social status of man. जदि गोटे लोकर हाई फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस अछि ताल से अधिका मैरिज कले भी ताको कहा जाउची गोटे हाई फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस प्ले करूची बोली ताको परमिटेड करा जाउची. बट इन सम अदर सोसाइटीज मोनोगामी इज स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड. हां कि नहीं मोनोगामी मैरिज टा को आउ किछि सोसाइटी रे स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब करा जायछि एटा. एंड आर बीइंग मैरिड टू मोर देन वन वुमेन इज ए सोशली एंड लीगली पनिशेबल ऑफेंस. सेरा गोटे पनिशेबल ऑफेंस भी पनिशमेंट भी ता पई रहिछि. सो डेविएंट बिहेवियर वेरिएशन बाय कल्चर. वेरिएशन बाय कल्चर बुझी परलो जेमते कि सोशल स्टेटस हिसाब रे जदि गोटे लोक आ गोटे वाइफ को मोर देन वन वाइफ वेरी करूची ताहले ताको कहा जाउची फाइनेंशियल स्टेटस वाला सोशल स्टेटस प्ले करूची सेटा परमिटेड इन some culture. But in some other culture we can say that monogamy is strictly prescribed. जोठी के monogamy form of marriage कहा जायछि. आउ सेठी जदि women मोर देन वन वाइफ होची ताले सेटा लीगली ऑफेंसेबल बा लीगली पनिशेबल ऑफेंस बोली हम ताको कहिताउ. सो एठी देखिलु वेरिएशन बाय टाइम. Third one is variation by social position. How variation by social position? The deviance can also vary with social status. Deviance ta vary करे social status को लेके. Certain behaviors are given greater approval for men than women. किछि behavior अछि जोटा कि
आमे जानूछु ग्रेटर अप्रूव्ड मिली थाए पुरुष मानक इन कंपैरिजन टू महिला मानक ठारू पुरुष मानक सेठी अप्रूव्ड मिली थाए अप्रूवल मिली थाए इट इज एक्सेप्टेबल फॉर मेन टू गो टू टॉपलेस इन द इनफॉर्मल ओकेजन मेन मानक अप्रूव्ड अछि बा जाको हमें कहूछु कोन permitted अछि to go topless in a informal occasion, but if the women do so they are considered deviants. So there is much diversity in behavior, convictions, sanctions in different societies. There are also variations in the meanings and definitions attributed to behavior and sanctions. So variation by social position also plays an important role in deviance. अच्छा एतिकी गला परे तापरे हमें देखिबा टाइप्स ऑफ डेविएंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेविएंस प्रथम होची कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डेविएंस in cultural deviation one departs from the norm of a culture while the psychological deviant deviates from the norms in personality organization. For example, the psychotic and neurotic both categories may be found in the same person. बुझिपारछ जिनस कोन लेखा हैछि प्रथम टाइप्स ऑफ डेविएंस रे कहआ जाउछि कल्चरल और साइकोलॉजिकल डेविएंस जेमिति कि आमे एठी देखुछु जेमिति कि डेविएशन वन डिपार्ट फ्रॉम द जदी तम कल्चर रे किछि गोटे खराब करिछ तमु सेटो बाहर करा देउछि दैट हैज सर्टेन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तम ऊपर कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पडुछि and it will that while the psychological deviant deviates from the norms in personality that has also affected your personality too सेटा तम पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करि थाए जेमिति कि हमें देखिछु गोटे साइकोटिक होंतु हो बा गोटे न्यूरोटिक हो दीटा कैटेगरी भी गोटे लोक पाखरे हमें देखिबा पई पाइथाउ बोथ कैटेगरीज मे बी फाउंड इन द सेम पर्सन. So it is the first types of deviance, that is cultural and psychological deviation. Second one is individual and group deviation. What is individual and group deviation? Now in individual deviation, the person deviates from the norm of a subculture. गोटे norm of a subculture रो person को deviate करा जाए. For example, a boy belonging to an educated and respected family takes to drugs and becomes a school dropout. जेते बेले गोटे पिलाटे कोन करूची माने डेविएट्स एजुकेटेड रेस्पेक्टेड द फैमिली टेक गोटे एजुकेटेड फैमिली रो पिला ड्रग्स नउची एंड ही बिकम्स अ स्कूल ड्रॉपआउट स्कूल भी अधारू छाडुची. In group deviation, the deviant subculture has norms which are condemned by the conventional morality of the society. tamane For example, a street corner gang of unemployed youth indulging in all sorts of unlawful activities. सेते बेले से गोटे खराब संगत रे आसिकिरी unlawful activities टा प्ले करूची. The gang will be well knit group having a private language. So the behavior of the group members and their activities are condemned by others in the society. एटा होची इंडिविजुअल और ग्रुप डेविएशन जेतले गोटे पिलाडा अधर ड्रॉप आउट करूची खराब गैंग रे मिसुची तम सेठी कोन आ गोटे कोन देखुचो एठी हमरा डेविएंट सब कल्चर प्ले करूची. सो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज जहा को हमें कहूचो इंडिविजुअल और ग्रुप डेविएशन बोली ताको कहूचो. नेक्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन. प्राइमरी डेविएंस कोन और सेकेंडरी डेविएंस. Primary deviance refers to the violation of social norms. Violation of social norms committed by a person who is not labeled as deviant and who is basically a conformist in his or her life. The deviant act is trivial or tolerated or concealed so that one is not identified as deviant. जेमति कि for instance, traveling ticketless once in a while, slipping an extra apple with the into the shopping bag without paying for it. बुझी परछ ना नहीं जेते बेले प्राइमरी डेविएंस कोन कहूची समटाइम्स जेते बेले हमें बेले बेले टिकट न नै कि पड़ै थाउ ट्रेन रे भो बस रे विदाउट टिकट हमें ट्रैवल करू ताको हमें कहूची प्राइमरी डेविएंस कि हमें गोटे एक्स्ट्रा किनिया गला बेले एक्स्ट्रा एप्पल टा बैग रे पके देथु पैसा दे नथु बुझी होची ना नहीं.
So this is called the primary deviance. Secondary deviance kona? The secondary deviation is that which follows from one's public identification as a deviant. Public identify କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ deviant. ତା ମାନେ କଣ? One is labeled as a deviant. The labeling process is often the point of no return in the development of deviance. It leads to isolation, possible dismissal, ostracism and sometimes even imprisonment. ताको तापर कौन करा जाए? शास्ति ପାଇଁ ତାକୁ जेल को भी पठेई दिया जाए. So this type ता माने पब्लिक माने ही कहंती जे ही डिनोट करंती जे से डेविएंट बोली. सो द ताको आइसोलेट एकुटिया कर रखा जाए बा ताको पूरा कारावास जेल आजीवन कारादंड करा जाए. से सब जिंस रे होची कोन सेकेंडरी डेविएशन. So the deviant may join the association of other deviants. से कोठी रुए आउ जो माने सब चोर माने जो चोरी कला पर जोड़ी जानती. So सब चोर गोटे जगह रे थांदी तो से ग्रुप रे ही अगेन जाई के रखा जाए. So this is called the primary deviation and secondary deviation. तापरे होची टाइप्स ऑफ डेविएंट्स. सिनफुल डेविएंट गोटे मिछ को पाप करथुवा लोक गोटे थांती. क्रिमिनल मेंटालिटी रो थांती. जो जे सेमानको हमें कहूछु सिक पर्सन्स. मेंटली सिक हेतिबे माने तांकर अबनॉर्मल जो से माने डेविएंट बिहेवियर प्ले करंती. alienated कहले हमें कोन ना तांको बाहर कर दिया जाउची. गोटे सोशल ड्रॉप आउट्स कराउची. एकुटिया करा जाय जाउची. इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज मेनी पीपल फील estranged or isolated from the values and norms. से माने सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज से निजो को निजो को अडॉप्ट करि पाउना. दे फील आइसोलेटेड फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. सेते बेले कोन होची ना डेविएंट बिहेवियर टा it is also one pattern alienated करा जाउची. Such in a variety and complexity of social deviance that there cannot be any universally applicable classificatory system of this phenomena. तो एटा गोटे टाइप्स रे हम देखिलु कोन तमर विभिन्न प्रकार टाइपोलॉजी रहिला. सिनफुल कले भी ताको भी गोटे पाप करथुवा लोक. फ्रीक माने फोकसेस नॉट सो मच ऑन बिहेवियरल पैटर्न एज ऑन physical attributes. Here deviance merely means variation from the average norms in a statistical sense. The inadequacy of this definition is that attitudinal and behavior. तमरा attitude और behavior ही माने show करूथबो जे तमे गोटे deviant behavior play करूछ बोली. Are not distributed in the population in the same way. This is known as the physical attributes. So एतिके गला पर alienated गला पर deviant बेरो again हमें देखिबा what are the different explanations of deviant behavior. First होछि biological explanations. Biological explanations कोन कहूछि ना these theories of deviance are generally traced by the Italian physician Lombroso. Lombroso ही biological theory ऊपर कहिसंती. Biological explanation देइसंती. Lombroso was interested in the scientific study of crime. Lombroso कहा पर इंटरेस्ट थिले ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम. He said that attention should be shifted from criminal act to the criminal, specifically to the physical characteristics of criminal. एठी को बायोलॉजिकल ही जस्टिफाई करूची physical characteristics of a criminal. He was convinced that there was a born criminal type. जन्मरु criminal mentality था. तांको कहा जाए कौन born criminal type. His conclusions were based on a comparison of 400 prison inmates. से 400 जो जेल कैदी को ऊपर स्टडी करिथिले with a group of Italian soldiers. Lombroso found that the inmates displayed certain physical abnormalities. से माने किछि गोटे physical abnormality जोगु समितिका deviations करूछंती. Such as deviations in head size, तांकर मुंड बड़ थिबो छोट थिबो, head shape, eyes defect थिबो, तांकर excessively long arm थिबो. बुझियोछि तो सेही बडा physical defects जो गुडा रहूची बा born criminals जो गुडा रहूची तांकर biological explanation से कहूची जे they are playing the deviant behavior. This led him to believe that criminal tendencies are inherited and that the potential criminals could be identified by certain physical characteristics or body types. गोटे निर्दिष्ट physical characteristics और body types रु ही तांकर कोन माने
आम ये देखु से पैटर्न ऑफ लंब्रोसंकर देखिलु गोटे जिनस जे फिजिकल टाइपोलॉजी उपरे बा बॉर्न क्रिमिनल टाइप बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स उपरे इनहेरिटेड पैटर्न उपरे ही डिपेंड करूची डेविएंट बिहेवियर टा सेटा होची कोन बायोलॉजिकल टाइप सेकंड आछि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस रे कोन इट फोकस ऑन द पर्सन हु एंगेजेस इन डेविएंट बिहेवियर psychological explanations lay emphasis on the minds of individual rather than on body types eta body types छड़ा mind ऊपर ही study करा गला so psychology mind ऊपर ही depend study करा गला and these explanations focus on such subjective factors as personality structure learning goals interest motivations willpower frustration ego anxiety guilt etc एते सबु जांको जिनिस होची these are the psychological traits of a personality structure so social psychologists often consider the social context of behavior in addition to these subjective factors so psychological explanation ta eta को deal करूची apart from the body how mind ego होची anxiety आछी frustration आछी ता माध्यम रे भी केमते deviant behavior आसी जाउची the next one is sociological explanations here the sociologists attempts to do some sociological explanation anomy theory कौन ना it focuses on value conflict between culturally prescribed goals and socially approved ways of achieving it socio-cultural learning theories concerned with the way people interact and learn deviance eta kaha को फोकस करूची ना सोशियो कल्चरल अफेक्ट्स एनोमी थ्योरी टा हमें जनरली एठी देखुछु कोन ना सोशियो कल्चरल जिंसटा को एठी फोकस करूची जेमति कि आमे हमर कल्चरली प्रेस्क्राइब्ड गोल्स गोटे सोशली अप्रूव्ड मीन्स आ गोटे हम पई कि माध्यम अलगा आ गोल्स माध्यम अलगा आ एठी कोन मीन्स गोल्स अलगा जतळे रही थाए सेतळे हमें देखुछु कोन कोन एनोमी थ्योरी तापर होची सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी सोशियो कल्चरल लर्निंग कोन ना जते बेले हमें एनोमी थ्योरी रो गोटे जिंस मेंशन करूछु कल्चरली गोल्स आ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स दीटा जते बैलेंस रही पारुनी सेते बेले हमें ताको देखुछु कोन ना कल्चरली प्रेस्क्राइब्ड हमें ताको डेविएंट बिहेवियर आसुची जते हमें सोसाइटी रे सही पैटर्न प्ले करि पारुनु ता भीतर हमर सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ वैल्यूज रे एडजस्ट करिवारे कोन होची डेफिशिएंसी देखा दउची जोथि पई कि हमें सोसाइटल नॉर्म्स को प्ले करा जाय पारो नाही तो सेठी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमी आसुची ता जहा को हमें कहूछु नॉर्मलेसनेस सोसाइटल नॉर्मलेसनेस बोली ताको कहल जाउची तो एटा हला सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस एनोमी टा नेक्स्ट वन इज आसुची तमरो सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरीज सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरीज कोन ना एठी हमें देखिबा these theories focus on those processes through which deviant acts are learned जहां माध्यम रे deviant acts are learned and the conditions under which learning takes place जहां माध्यम रे learning society learning टा देखिबा पई मिले these theories emphasize presence of groups that people belong to and how they learn the norms prescribed to the groups group हिसाब रे group norm ताको केमिति प्ले करिवे से हिसाब रे एठी करा जाउची ताको कहउछ हम सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरीज नेक्स्ट वन इज सब कल्चर और कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी सब कल्चर थ्योरी कोन ना द एम्फासिस इज ऑन सब कल्चरल एक्सप्लेनेशंस लाइक तमरो ट्रेडिशंस attitudes behavior and groups or sectors of society culture consists of values beliefs knowledge attitudes ideas shared by members of society but within this केतबेला हम से सब जिंस करू कोड करू माने
find out karuchu. So thus there are some subcultures which perpetuate and give support to deviant beliefs and values. एटा ही तमरो deviant beliefs और values society रे कौन किसी जिनसा आणुची बोली कह जाउची ताको हम कहूचे subculture theory. जेमति कि for example some of the criminals, delinquents, homosexuals, drug addicts may constitute specific groups of deviants, each of which have some attitudes, beliefs, values, behavior patterns shared by the respective. तामाने एटी criminals माने जो भलिया subculture theory रहुचंती delinquents माने जो माने छोटो बेलू अपराध करथांती हला आबा homosexual मान ग्रुप भी एका ही नता है बट ड्रग एडिक्ट करबो तो सही तरह जानती नहीं तो तांको सेति पय कैटेगराइज करा जायछि कोन एटा सब कल्चर और कल्चर ट्रांसमिशन थ्योरी. नेक्स्ट तापर हम देखिबा द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी. डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कोन ना द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वाज डिवाइस्ड बाय सदरलैंड को द्वारा करायछि. He tried to find the answer of the question why are some people attracted to deviant behaviors while others are not. गोटे क्वेश्चन फाइंड आउट करिया पई चाहिचंती जे काहे कि अधिकांश किछि लोक अट्रैक्ट होचोती डेविएंट बिहेवियर को अलगा माने हो नाहंती. मोर स्पेसिफिकली ही अटेम्प्टेड टू फाइंड आउट व्हाई क्राइम रेट vary among different groups of people. काहे कि क्राइम रेट ता vary करूची माने सब जगह रे एका प्रकार रा नुहे. दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी रे से सेटा देखि. नेक्स्ट is labeling theory. Labeling theory कोन ना the theories mentioned so far have focused on deviance in terms of people and the process of law. Labeling especially at the consequences of labeling a person deviant. How does the society construct the definition of deviance? Label तार माने deviant behavior रो बा deviant personality रो गोटे label को केते पर्यंत अछि सेटा को से देखियो चाहिजनी. First it directs attention to the fact that social deviance as defined by social norms is relative. What is deviant is in at one time in one context may not another time or context. माने कहउछनी जदी जने एबे डेविएंट रोल प्ले कर देछि ता माने हो जे से आ गोटे टाइम रे से रोल ता रही थिबो से may not be play that pattern of deviant behavior. Secondly, the role of those involved in labeling a person deviant, it is itself an independent variable in creating or leading to the deviance. अच्छा तापरे होची conflict theory. Conflict theory कोन कहउची ना conflict theory argues that most societies have many groups which have different often conflicting values. The strongest groups in the society have the power and authority to define the values of weaker and subordinate group as deviant. तामाने एठी conflict theory कहउची जो गुडा strongest group in a society have the power and authority. जो माने strongest group तांको पारे power और authority रहउची to define the values of weaker and subordinate groups as deviant. तामाने weaker group माने deviant बोली कि समाने देखेबा पई कि तांको माने गोटे conflicting ये रहउची जे weaker group होउची deviant group और stronger group होउची कोन power और authoritarian group बोली कहआ जाउची. So this is the basis of conflict theory. अच्छा एति की गला परे तापरे नेक्स्ट तमर आसुची जेंति की नोट्स alienation कोन alienation होची कोन a psychological condition where an individual feels that he or she is isolated from the rest of the world. जेतले गोटे व्यक्ति निजको माने आइसोलेट फील करे जे से ताको अलगा करा जाउची सोसाइटी थारु से that feeling is known as the alienation. Then anomy kona na it's a social situation in which values are conflicting, weak and absent. Instinct kona na a complex behavior pattern that is biologically inherited and common to all members of a given species. Social status kona na position individuals occupy in a society like father, mother, occupational positions like teacher, student, etc. So these are the deviance. The next unit is based on social conflict. Social conflict kana now social conflict is an important area of sociological study. Here we will discuss the basic concepts of social conflict and also
also discuss the contributions of Karl Marx and Max Weber in the field of social conflict. Social conflict kohuchi it is the thing which focus on the nature of social order, social stability and consensus. The second one is also deals with change, disorder, instability and social conflict. तामाने आमे जदि देखिबा सोशियोलॉजी रे प्राइमरली दीटा जिंस को फोकस करा होची. गोटिए फोकस करूची कोन ना नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल स्टेबिलिटी आ कंसेंसस को. आ सेकंड वन कोन डील करूची ना चेंज, डिसऑर्डर, instability and social conflict. So sociological perspective falls broadly in two categories. गोटिए consensus based आ गोटे होची conflict based. Consensus based टा होची कोन order और stability. Concept जो conflict based टा होची कोन it is related to instability and disorder. Instability, disorder or we can say instability and change. So perspective प्रथम आमे देखिबा Karl Marx कर opinion on social conflict. Karl Marx's contribution in the area of social conflict is immense importance. Social conflict he believed was the source of all social change. Karl Marx को हिसाब रे सामाजिक social conflict टा ही सामाजिक द्वंद्व टा ही सामाजिक परिवर्तन मुख्य he saw so conflict as a social relationship between two classes. Conflict काहार सोशल रिलेशनशिप दीटा क्लास ग्रुप रो सोशल रिलेशनशिप टाको हमें कॉन्फ्लिक्ट कहू. से दीटा क्लास ग्रुप कोन हैविंग अपोजिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट. से जो दीटा क्लास ग्रुप कोन गोटे होची हाफ बा रिच आ गोटे होची हैव नॉट बा पुअर. एठी होची दीस टू क्लासेस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी. कार्ल मार्क्स conflict analysis करछने सेति पई से कैपिटलिस्ट यू ऑलरेडी रेड दिस इन योर sociological thought paper पढिथिबो मार्क्स कर टू क्लासेस कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो. वन इज bourgeois बा ओनर्स और हाफ. अनदर वन इज कोन हैव नॉट्स बजा कोच प्रोलेटारिएट. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जोठी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अछि सेठी कोन देखा जाउची सोशल कॉन्फ्लिक्ट होची. These organize the members to overthrow the rules of the half through the revolutionary action. The resulting new social order is an improvement with the old one. जेतो new social order आछि सेतबेले सेटा कोन गोटे improved version old one improved version आसे. काहे कि ना से प्रथम रो कहउचंती जे तांकर बेसिक होची कोन ना the source of conflict होची source of all social change. Thus, Marx looked at social conflicts essentially within the spheres of economic life. His analysis concentrated primarily on the analysis of class conflict in capitalist society. तापर असुची perspective of Weber. Weber कर Max Weber कौन कहउचंदी ना he too insisted that social conflict cannot be excluded from social life. सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हमें सामाजिक जीवन रु बाहर कर दे परिबा नाही. He pointed out that conflict is a social relationship which has its own characteristics. conflict रो निर्दिष्ट characteristics रहिछि जेमिति कि the action within the relationship is oriented intentionally to carry out the will of the actors or groups against another actor or group. Second one is the effort to carry out one's will against the other stimulates the resistance from the other against its imposition. This might have the elements like power and exercise of power intentionally, resistance from the group or individual facing its imposition. Weber did not see conflict as being confined to the economic sphere alone. जेमिति कि मार्क्स को भलिया से खाली इकोनॉमिक स्फीयर रे कॉन्फ्लिक्ट को एनालिसिस करना दी. He held that conflict arises over the scarcity of resources. केतेबेले कॉन्फ्लिक्ट आसुची ना जेतेबेले scarcity of resources संबळर scarcity देखा दउची सेतेबेले कोन कॉन्फ्लिक्ट देखा होची. scarcity of resources कोन लाइक प्रेस्टीज हैला, पावर हैला, property हैला, material wealth हैला. These are the resources. When we found this scarcity within the resources, we feel the social conflict. He pointed out that the leaders who manage the resources of large scale industrial, government, religious organizations have a great deal of power. They can assert and have asserted that their will against the will of other group in society and even the outside society.
सो तांको हिसाब रे कोन कहूची कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप ना इट इज ए स्ट्रगल ओवर द वैल्यूज at least two parties are involved conflict by nihati dita parties involved rahibo in a conflict relationship. Third one is the conflicting parties often aim to injure and eliminate their rivals. Conflicting parties सबले कौन चाहिए ना सबले केंदे injure करिवा पाई और eliminate करिवा पाई तांकर rivals opposing party को. Conflicts can occur within the group or between the group. गोटी group और group भीतर ही देखा जाए. तापरे होची conflicts are persisted through time and they are the feature of the social life. So conflict टा गोटे it have persisted through a time गोटे निर्दिष्ट समय अवधि रे रुहे and it is also a feature of social life. सामाजिक जीवन शैली रो conflict गोटे अंग बोली अंश बोली कहा जाउची. एतिक जानला परे then what are the elements of social conflict? Social conflict रो element कोन? Now in social conflict the focus is essentially on the opposition between two or more social categories. Undoubtedly opposition टा कोठी रहिबो दीटा और दीटा रो अधिक categories भितरे. All situations of conflict involve the element of power. Element of power टा को denote करिबो. Conflict may involve hostile sentiment and attitudes. Third, the next one is it is important to differentiate between objective base of conflict and subjective base of conflict. Differentiate dita bhitar kariya padibo objective base conflict au subjective base. Objective base kaha ko kohuchi na tamara conflict can break out over the distribution of a variety of scarce material and non material things like wealth hela, income hela, power hela, prestige hela. So these are the denoted as the objective criteria. Such occasions or conflict need to be separated from the subjective elements. Subjective elements कौन? Attitudes, feelings of resentment, hatredness, anger. These are the subjective things. बा जहाँ को हमें aggressive attitudes उड़ा को कहूँ. The conflict relationship between often involves two positions. गोटे होची for and against. गोटे होची powerful और गोटे होची powerless. Conflict may be confined to small groups. Conflict may occur between societies. The conflict interaction might take the different courses. It is possible that it may have the extent. Violent conflicts between groups often involve the use of force. तापरे अछि functions of social conflict. Functions रे positive impact किछि रहिछि negative impact. Positive impact रे हमें देखुछु कोन ना जेमति कि सिमेल आउ कोजर जॉर्ज सिमेल आउ लुइस कोजर कहिचंदी फर्स्ट बाय कॉन्फ्लिक्टिंग विथ वन अनदर ग्रुप द सोशल सॉलिडारिटी ऑफ ए गिवन ग्रुप इज इंक्रीज्ड विदिन से कहचंती यदि गोटे ग्रुप रे कॉन्फ्लिक्ट होची ताहले सेटार सोशल सॉलिडारिटी से ग्रुप सॉलिडारिटी दा सोशल सॉलिडारिटी बेसी बढ़ी जाउची ना केमती ना देयर इज अ बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेटर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कॉन्फ्लिक्ट हैला पर ही सब जिंस बेटर आसीबो better coordination or better structural arrangement possible hey pare inside that particular group. We are all the quite conversant with that particular situation. What are the dysfunctions of conflict? Now there are of course numerous dysfunctions of social conflict such as increasing differences in a group resulting in extreme cases in the breakup of the group, civil war, the emergence of one of the independent state. How can we of human life, loss of human life हुए, property हुए, as well as resources हुए. So conflict has certain dysfunctions too. Then next types of conflict. Types देखो मैं briefly कहूँ कोटे हला class conflict. Class conflict which are based on the system of stratification. Class जो तमरा higher middle upper middle और lower class ता बेसिस रे जो stratification करा जायछि सेटा होछि class based conflict in the society. Then political conflict which are based on the acquisition of power, acquisition of competition for political power. Political power kind that is denoted as political conflict. And what or conflict which are mainly based on the consideration of maintenance of group. गोटे जो कम्युनिटी बा जो कम्युनल बैकग्राउंड रो तमे बिलोंग करथबो जो एथनिक बैकग्राउंड
background ରୁ ତମେ belong କରୁଥିବ ସେଇ religious group को ଅଧିକା consideration ଦବା ultimately it will hamper the other group ହଁ କି ନାହିଁ ସେଟା other group को hamper କରିବ so it is denoted as a communal conflict or ethnic conflict. Last one is factional conflict. Factional conflict which occur among small group. It is small group भितर देखा जाए claiming position of power within small community. छोटा community बड़े factions माने छोटा छोटा खंड भितर जेतबे छोटा छोटा community claiming their position of power से माने निजर position of power ପାଇଁ जेतबे demand करନ୍ତି then it creates a small group conflict which denoted as a factional conflict. Eta one by one in detail with amara study material go through that. तापरे हमें जिब्बा तमरा typology परे. Next is conflict as a condition of social change. How conflict is related to as a conflict of social change हिसाब रे केमती आसुची. ना हमें जानिचु conflict as a condition of social change can be looked at from so many angles. Both angles हमें justify करी परिवा. Conflicts may lead to the consolidation of units. They may also lead to the new forms of social stratification or reinforce existing pattern of stratification in new ways, inventions, new discoveries, new phenomena. एगुड़ा सब आसी थाए through the conflict जहाँ के social change आड़ू को दोची तमरो. एटा सरला परे नेक्स्ट आसुची तमरो सोशल चेंज अनडाउटली हमें छाड़िलु जोठु सेठु ही आरंभ करिबा जे कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स सोशल चेंज हियर द नेक्स्ट यूनिट इज डीलिंग विथ द सोशल चेंज. सोशल चेंज मु तुमको स्टार्टिंग रो कहिची मॉडिफिकेशन अल्टरेशन टा को हमें कहूछु चेंज. चेंज इज अ वेरी ब्रॉड कांसेप्ट. Though change is all around us, we do not refer it at we did not refer to all of it as a social change. ता माने कोन ना द फिजिकल ग्रोथ फ्रॉम ईयर टू ईयर तमर जो फिजिकल ग्रोथ होची वर्ष तमर जो जतरा जन्म जो बर्थडे सेलिब्रेशन करूछ year to year physical growth तमर सेटा भी that is also a pattern of change. A change of season जो change होची तमर रेनी सीजन समर सीजन विंटर सीजन सीजनल चेंज को भी हमें चेंज कहूछु. डू नॉट फॉल अंडर द कांसेप्ट ऑफ सोशल चेंज किंतु आखु हमें सब सोशल चेंज बोली कहू ना हो बुझी पारला. दीज आर द चेंजेस. देन क्वेश्चन कम्स व्हाट इज सोशल चेंज. ना सोशल चेंज काहा को हमें एठी डिनोट करबा अनडाउटली जेतेबेले हमें एई सब जिंस को जानिलु जे. But in sociology, social change denotes to the alterations that occur in the social structure and social relationship. जेतेबेले social structure और social relationship रे जो changes आसे ताकू ही हमें sociology रे कहिता हो social change. So change has certain features or certain aspects like social change is essentially a process of alterations. Change in the society are related are linked to change in culture. Social change can vary in its scope and in speed. It has vary
Hello, Hello, ma'am. hello, Hello, ma'am. ma'am. Hello, madam. Hello. 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 Hello, ma'am. Ma'am, respond.
आगे ना दी हाँ उड़े